मरियम पाकर आ जाएंगे। मरियम पाकर, वेयर वर यू ऑल दीज डेज? लास्ट क्लास में थे आप? नहीं सर। क्यों? जी, क्या हो गया था? Sir, actually we had to go to the hospital, so. Okay. So in the last lecture, what did we do? So in the last lecture, we saw the oxidation of aldehyde and ketones. And in this, first of all, we looked at the tolerance reagent, right? Tolerance test. Now, this was the first one, right? Next. Felling's test. Okay, so what is Felling test, please see? Felling's test consists of a solution that is freshly prepared using Felling solution A and Felling solution B. Now, what is Felling solution A and Felling solution B? So, see, main important part is if you in Felling solution A, we have copper 2 plus ion, and usually this copper 2 plus ion is from copper sulfate. Okay. In Felling B, we have alkaline potassium tartrate. Okay. Basically, we have some sodium and potassium tartrate. So, sodium and potassium tartrate. Okay, what do we have? Sodium, potassium, tartrate. So tartaric acid, you must have seen this in previous classes. Tartaric acid is OH bonded to carbon atom, CH, and this COOH. Here also CH, COOH, and here you have OH. This COOH now, okay, potassium tartrate, sodium potassium tartrate. So in this CO negative, Na positive in one case and K positive in the other case, sodium potassium tartrate. But you don't have to worry so much. What you need to remember is that aldehyde plus Felling solution Felling solution is the solution of A and B, a mixture of A and B. So both of these A and B are freshly prepared and then they are mixed. So aldehyde plus Felling solution, it gives Cu2O, copper oxide, and this is red PPT. This is red PPT.
अच्छा, okay, okay, fine. Please write this down. Done, sir. All of it done? Yes, sir. Please see me. No, sir. Please write. Please write. Done. Okay, so basically what happens here, you will get a red PPT. With the Cu2O what it is, red PPT, and that is why. And as you can see, I've written only RCHO, that means only aliphatic aldehydes. Aromatic aldehydes, they do not show aromatic aldehydes. They do not show Fehling test. Huh? They don't give red PPT on Fehling solution. Okay. Also, one more thing. Plus, you will get RCOO negative. So oxidation of aldehyde will take place COO negative. So please write only aliphatic aldehydes give positive Fehling test. Done everyone? Is going to please tell me? Anji. So only aliphatic aldehyde gives positive Fehling test. Aliphatic, I mean last class में शायद हमने किसी को बताया था. If it is not aromatic, it is aliphatic, हो ना? Long carbon chain अगर होगा, single carbon, अगर benzene ring नहीं है ना, that means basically it means benzaldehyde does not give understood. Mariam Patun. Yes, sir. Parker understood. Yes, sir. Now after this, please write. यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, फेलिंग सोल्यूशन में ना Cu2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, फेलिंग सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव होता है, बट जनरली आपको बस ये देखना पड़ेगा, रेड पीपीटी मिल जाता है आपको, दैट इज व्हाई दिस इज द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट. नेक्स्ट प्लीज राइट हैलोफॉर्म रिएक्शन. This is also very important. Please write aldehyde and ketones with 1 CH3 group directly connected to carbonyl carbon are oxidized by sodium hypohalite. Sodium hypohalite is NaO
and BRCl or anything else. So in general, NaOX. Okay, NaOX is no reagent. It is a general form of a reagent. Okay, NaOBr is a reagent. NaOCl is a reagent. Okay, NaOX is not a reagent, it is a general form of a reagent. Okay, by sodium hypohalite to sodium salts of corresponding carboxylic acid with one less carbon. So basically, if you have R, C double bond O, CH3, and you react this with, let's suppose, NaO, Br, then you will get C. This carbon atom will be gone. You will have R, C double bond O as it is, and you will get ON. This is what carboxylic acid, plus you get halo form. Halo form means what? CHX3. And CHX3. And what is X here? Br. So you will get Br3. Okay. Similarly, if you have H, carbonyl, and then CH3, this is an aldehyde, right? With one CH3 and C double bond O group. Now, if you react this with, let us suppose NaOCl, then you will get H, C double bond O as it is, and then OH. Now, this CH3 will be converted to chloroform, that is CHCl3. This is CHCl3. Okay. Please write this down. उसके बाद दो नोट लिखिएगा यहाँ पे. First note is that sodium hydroxide plus halogen X2, it gives you what? NaOX. Meaning, for example, ये रिएक्शन में OH होगा या ON? नहीं, my bad. ONA होगा, my bad. If you have NaOH plus Cl2, it is going to give you NaOCl. If you have NaOH plus iodine I2, you will get NaOI. Okay. Right, next. Reaction with NaOI gives CHI3, which is yellow PPT. Which is yellow PPT. Which is yellow PPT. Therefore, iodoform reaction can be used for detection of CH3 C double bond O fragment. CH3 C double bond O fragment.
Okay, by the way, guys, all of you understood this? Yes or no? Please tell me this point. हाँ या ना बताएं? Got it, sir. Yes, Got sir. it, na? See, Mariam Parker, you, if you write it, it will be good. Okay, if you write it, it will be good, because sometimes they ask you to even give the reaction. Okay, so you have to write those things: yellow PPT, red PPT, all of these things you have to write. ना? ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन कर देते हैं, ठीक है ना? वी हैव सीन 3 डिफरेंट टेस्ट, सो कंक्लूजन में यहाँ पे लिखिए। अच्छा, उससे पहले एक एग्जांपल लिखा देते हैं ना आप लोग को। फॉर एग्जांपल, हाँ श्योर श्योर। सी देखिए, first of all, in the chat please write, okay, in the chat please write, will this give haloform reaction? Like if I react this with NaOI, then is it going to react? What do you guys think? Please write in the chat, yes or no. Okay, Parker. जिनको लगता है I don't know ना, वो I don't know लिख दें please. If you don't know, please write I don't know. Can't say, can't decide. What about others? Alia is confused. Okay, fine. देखिए, now I would ask मरियम खातून। मरियम खातून की आवाज बहुत धीमी आती है, तो आलिया, maybe you, huh? Alia, can you please write, read the first statement what we have written for haloform reaction? No? We wrote something, right? Aldehyde and ketones having, can you please read it loud? Aldehyde and ketones with one CH3 group directly attached to carbonyl. Wait. फिर से पढ़िए उस पार्ट को, at least one CH3 group attached directly to carbonyl carbon. Wait. One say, देखिए ध्यान सुनिए, all of you please listen to Alia very carefully, and you guys can also read from your own notes. One CH3 group directly connected to carbonyl carbon. One CH3 group directly connected to carbonyl carbon. I want all of you to make this fragment. एक CH3 directly connected to carbonyl. One CH3 directly connected to carbonyl. Those who said not, I don't know. This is the work for them. Alia, Mariam Khatun, and Saad. Aisha, you are, what happened? Aisha, you did not give any answer. Aisha. Yeah. I can't understand what you said. Guys, all of you please try to make one CH3 group directly connected to carbonyl carbon. Try to make this fragment, CH3 connected to carbonyl carbon, and send me on WhatsApp. Send me on WhatsApp. Sir, can you repeat? You have to draw CH3 directly connected to carbonyl carbon in your notebook and send me on WhatsApp. Got it, Alia? Yes, sir. नहीं,
नो नॉट, नहीं मरियम, ऐसे नहीं बनेगा ना। आपने एक एग्जांपल बना दिया, आई वांट द एग्जैक्ट फ्रैगमेंट, बट ठीक, हम समझ रहे हैं व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो मरियम। ओके, others please send me. So should I make again and send? No, it's fine. सात carbonyl carbon is C double bond O. Carbonyl carbon is C double bond O. Send it quickly. ये अच्छा, once again, Mariam Khatun, you can't draw this fragment by statement. Khatun, yes or no? Are you able to draw the fragment? Send whatever you have drawn, please. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा। आई मीन पिक्चर अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई, खत्म बात, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं कुछ। ठीक है, हम समझ रहे हैं आप लोग की बात को, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप आई मीन एग्जैक्टली आप लोग ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं। आप एग्जाम्पल ड्रॉ कर दे रहे हैं एल्डिहाइड का, है ना, थोड़ा तोड़ के लिखने की चीजों को ना आदत रखिए। यू कैन राइट थिंग्स इन फ्रैगमेंट्स आल्सो। देखिए सी यार गाइस, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत भेजना चाहिए था आप लोगों को। CH3 कनेक्टेड टू क्या, बोलो, कनेक्टेड टू क्या? C double bond O. Aisha, I don't know what what you have sent me. बस अगर ये हुआ कहीं, then haloform reaction will happen. यही है ना मतलब यार, अरे बोलो हाँ या ना, tell me guys. Yes, If this sir. fragment is present, then only the reaction will happen, ना? Mariam Parker, Mariam Khatun, Aisha and Saad. Yes, sir. ठीक है, तो बताइए, is this type of fragment present in this molecule? Is any CH3 directly connected to carbonyl carbon? No, sir. No. Yes. क्या बात कर रहे हो यार साथ इस तरह से, ध्यान दे लो थोड़ा। CH3 कहाँ दिख रहा है आपको, क्या बोल रहे हैं हम आपको? हाँ, दिस विल नॉट शो एनी रिएक्शन, बट अगर यही कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे अगर होता, आप बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब आप लोग सर्कल कीजिए कहाँ पे वो फ्रैगमेंट है और हमको भेजिए। वेयर इज द CH3 C double bond O फ्रैगमेंट? सर्कल करके जल्दी भेजिए। एक जवाब नहीं भेजते आप, साथ जानते हैं आप। Did you watch any lecture whatever you have missed? आपको ये भी पता है कि आपने कौन कौन से लेक्चर मिस किए हैं साथ छुट्टियों के दौरान? पता है आपको? आपने कोई लेक्चर देखा लास्ट क्लास से अब तक? आपने कोई लेक्चर देखा? कौन सा लेक्चर देखा बताइए? यस करेक्ट, मरीम खातून, खातून करेक्ट। अब समझ में आ गया ना खातून आपको, आया ना? जी सर। देखिए तो अब क्या होगा, 1 2 3 4 ना, तो ये इस तरह से डबल बॉन्ड हो तो रहता ही। हियर यू गेट NaONa, थोड़ा सा इसको चेंज करके बना लेते हैं ना, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 रहेगा, COONa हो जाएगा, प्लस this CH3 here, this will be converted to CHI3. This will give yellow PPT. This will not give yellow PPT. Lecture 1 haloalkene halogene. Okay. All of you understood this?
हाउ इट इज अ टेस्ट। खासतौर से मरियम खातून आप बताइए, आप पूछ रही थी। यू अंडरस्टूड दिस नाउ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग कंक्लूजन लेते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज लिख लीजिए जरा, उसके बाद लेट मी नो वंस यू आर डन राइटिंग। ठीक है साथ करेक्ट, CH3 यहाँ पे साथ थोड़ा बस हम आपको ना करेक्ट करेंगे यहाँ पे फिर से। आपको ये CH3 तो आपने यहाँ देख के बना दिया है ना, हमने यहाँ छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन आपको फ्रैगमेंट जो देखना था, फ्रैगमेंट ये फ्रैगमेंट है। If this fragment is present, then only the reaction will happen. This fragment. चलिए पहले हटाइए। Conclusion देखिए, what is the conclusion? देखिए, first of all we have tolerance reagent. Those who are not present in the last class उनको नहीं पता होगा, but first we saw tolerance reagent. ठीक है, tolerance reagent. कौन कौन टेस्ट देगा ये वाला पॉजिटिव और कौन कौन नहीं देगा? नंबर 1 ए पार्ट, aliphatic and aromatic aldehydes, ऐसे लिखिएगा, aldehyde can reduce tolerance reagent. Ketones cannot reduce tolerance reagent. Okay. Is it fine? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. That means this test can be used for distinguishing of ketones and aldehyde. Used for distinction of ketones and aldehyde. Second, अच्छा, it is also known as silver mirror test. Okay, silver mirror बन जाता है इसमें, silver mirror test. Second is spelling solution, है ना? Spelling solution अगर याद कीजिए तो नंबर ए पार्ट, only aliphatic aldehydes can gives spelling test. ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग सॉल्यूशन में क्या होगा? फॉर्म्स रेड पीपीटी, फॉर्म्स रेड पीपीटी। ठीक है, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड गिव्स स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, बी पार्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अलग अलग ही लिखिए, एल्डिहाइड डज नॉट गिव spelling test. C, ketones does not give spelling test. ठीक है, so it can be used for distinction of, used for distinction of
used for distinction of aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. Aliphatic and aromatic, है ना? तो एलिफैटिक देगा, एरोमेटिक नहीं देगा, तो है ना, दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स. Another point used for distinction of aliphatic aldehyde and ketones, any type of ketone and ketones. Got this? Yes or no, please tell me. और तीसरा टेस्ट हम लोगों ने क्या देखा है? आयोडोफॉर्म. क्या देखा हमने? आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म टेस्ट. ठीक है. फॉर्म्स CHI3 आयोडोफॉर्म इसी को बोलते हैं, which is yellow PPT. Used for detection of CH3C double bond O fragment in aldehyde and ketones. Is everyone done? Yes or no, please tell me. Done, sir. Okay. Now, one more thing is that there is another test, that is Benedict test. Okay. So Benedict test is it has similar results as that of the Fehling solution. है ना? वहां पे भी copper 2+ होता है and it gives Cu2O as brick red precipitate. Benedict टेस्ट कहीं पे आएगा तो फिर आप घबराइएगा नहीं, मतलब वो आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, NCERT में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछ सकते हैं कभी, है ना? बेनेडिक्ट टेस्ट आपके ऑप्शंस में आपको दिख सकता है, इवन दो इट इज नॉट देयर ना, तो आपको ऑप्शंस में दिख सकता है कि दिस एंड दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस टेस्ट, उसमें बेनेडिक्ट टेस्ट एक तरह से. ठीक है. बेनेडिक्ट टेस्ट भी किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ठीक है. दिखा दीजिए इसको भी. बेनेडिक्ट टेस्ट को लिखा है या नहीं लिखा है? बेनेडिक्ट टेस्ट रहने दीजिए, है ना, इसको मत लिखिए अभी आप लोग. चलिए, अब उसके बाद कुछ सवाल लिख लीजिए. क्वेश्चंस. सेकंड. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, है ना. आप बस टेस्ट बताइए कौन सा टेस्ट यूज कीजिएगा.
ये 4 सवाल है। 1 2 3 करके प्लीज आंसर कीजिएगा ना, ABCD जैसे भी करके। पहला कर दे क्या हम, टेल यू हाउ टू डू इट। देखिए हम आपको सीक्वेंस बता दे रहे क्या करना है। चलिए ठीक है, आप लोग ने कुछ कुछ आंसर कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट लीजिए, उसके बाद हम आंसर्स को देखेंगे, ठीक है। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे शांत बैठे रहते हैं। तो अच्छा मतलब पता ही नहीं है क्या करना नहीं करना। आपको बस ये बताना है, आपके पास यू हैव 2 कंपाउंड्स, राइट, यू हैव 2 कंपाउंड्स। देयर विल बी अ टेस्ट जिसमें से देयर विल बी अ टेस्ट which will be given by this one and not this one, or it will be given by this one and not this one, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन होगा जो A कंपाउंड देगा, this let us suppose we have A and this is B, there will be a reaction which will be shown by A but not by B, it will be shown by B but not by A। समझ में आ रही सबको, हाँ या ना, ठीक है। आपको बस वही चूज करना है कि कौन देगा कौन नहीं देगा। Sir, बताइए। sir, can you explain the 7th question? हम सारा ही कर देंगे, इससे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बताइए, देख ऐसे ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, देखिए टॉलेंस, फेलिंग और आयोडोफॉर्म, ठीक है ना, 3 है, हाँ या ना, करेक्ट मरियम, आप ही सवाल कर Yes, रहे sir. थे ना, ठीक है। सुनिए, बेंजल्डिहाइड टॉलेंस देगा नहीं देगा, Yes, sir. फेलिंग टेस्ट देगा या नहीं देगा, No, sir. आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, Yes, sir. आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, No, sir. क्यों नहीं देगा बताइए।
क्यों नहीं देगा? बोलिए। पार्कर, आयोड सी बेंजल्डिहाइड में Yes, sir. to give benzaldehyde, to give iodoform test, benzyl, I mean, it should have CH3 C double bond हो ना, बेंजल्डिहाइड में तो वो होगा नहीं. You should Yes, say, sir. sir, it does. So it does not have the CH3 C double bond of fragment. Okay, it will not give iodoform test. अब देखिए benzoic acid. ठीक है, you were not present in tolerance test, but if you look at tolerance test, then actually what is happening here, it is getting converted to carboxylate ion. Okay, it is getting converted to carboxylate ion. So in this case, what is going to happen? If it is already carboxylate, so it cannot be further oxidized. That is why this benzoic acid, it will not give tolerance test. So here you have found the test na, benzaldehyde gives tolerance test, benzoic acid does not give tolerance test. उससे आसान है कि आपको बता रहे हैं. Benzoic acid is the acid. Benzaldehyde is not an acid, right? Benzaldehyde is not an acid. So if you add a pH paper on benzoic acid, then it will give you ना region, और आप litmus test कर सकते हैं, blue to red हो जाएगा. Correct? ठीक है, otherwise, but you should write tolerance. Okay, so benzaldehyde will give you tolerance test, but benzoic acid will not give you tolerance test. Got it? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद चलिए बाकी हम सारा देख लेते हैं. देखिए C6, ये बताइए यहाँ पे भी टॉलेंस, फेलिंग, आयोडोफॉर्म. विल दिस वन गिव टॉलेंस टेस्ट? रिएक्शन करेगा टॉलेंस में? C6H5COCH3, व्हाट इज दिस? कीटोन और एल्डिहाइड? दिस इज कीटोन और एल्डिहाइड. ये बोलो ना यार, जल्दी बोलो यार, माइक ऑन करके रखिए आप लोग. Ketone. कीटोन. विल इट गिव टॉलेंस टेस्ट? No. यस और नो? No, sir. No. मरियम खातून, आलिया, प्लीज आंसर. ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज आंसर ना. फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट देगा? Yes, sir. देगा. क्यों देगा? क्यों देगा यार फेलिंग टेस्ट? ये कीटोन डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट. पार्कर बोलिए, बात समझ में Yes, आई? sir. फेलिंग टेस्ट नहीं देगा. आयोडोफॉर्म? Yes, sir. आयोडो देगा. ठीक है, अब इसमें आ जाइए. टॉलन, फेलिंग, आयोडोफॉर्म. विल दिस वन गिव टॉलेंस टेस्ट? यस और नो? यस. Yes, sir. फेलिंग टेस्ट देगा? नहीं देगा, है ना भाई? यहाँ पे लिखा हमने aromatic aldehyde does not give Fehling test. Okay, will it give iodoform? Yes, sir. Why it will give iodoform यार? पार्कर क्या हो गया आपको? आयोडोफॉर्म कैसे? आयोडोफॉर्म में क्या होना चाहिए बताइए तो जरा. पार्कर कैसे बोल रहे हैं आप आयोडोफॉर्म देगा? कुछ सोच के बोल रहे हैं, बिना सोचे बोल रहे हैं? ये बताइए पहले तो. आप कुछ सोच के बोल रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, या फिर बिना सोचे बोल रहे हैं? अच्छा एक और, अरे ठीक है, एक और. हम जब आपसे सवाल कर रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या मतलब इसका? कि ये येलो पीपीटी देगा, है ना पार्कर? मरियम पार्कर, Yes, sir. यही मतलब है ना आपका? तो क्या ये येलो पीपीटी देगा? हाँ या ना? आप क्या बोलो ना. नहीं पता आपको? डिसीजन तो जल्दी ले लो यार. पता है नहीं पता है? No, sir. नहीं पता है. आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या कंडीशन है? इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, देखिए ये फ्रैगमेंट है इसमें बेंजल्डिहाइड है ना, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ है यहाँ? पार्कर No, sir. हाँ या ना? नहीं है ना? पक्का? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए
Now these two can be distinguished using two different tests. आप अगर टॉलरेंस टेस्ट भी लिखते तो आप ये बोलते हैं कि दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, दिस विल नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, सॉरी दिस विल नॉट, ये उल्टा कर दिया हमने, ये टॉलरेंस टेस्ट को नहीं देगा और ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, ठीक है। यू कैन हैव टॉलरेंस टेस्ट और यू कैन हैव आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म देगा, ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना? बोलो भाई। ओके, सो दिस कैन बी, अब दोनों आंसर सही है, ऐसा नहीं कि दोनों लिखना पड़ेगा आपको, दोनों आंसर सही, कोई एक भी लिख सकते हैं आप। दे आर आस्किंग डिस्टिंग्विश ना, so you will say C6H5 CO CH3 will give iodoform test, C6H5 CHO won't. और क्या लिख सकते हैं आप? C6H5 CHO will give tolerance test, but C6H5 COCH3 won't. बात समझ में आ गई? हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए फिर से यहाँ पे आते हैं ना। आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे इनसे डील करेंगे, मतलब ऐसे ढूंढना नहीं है, आपके पास टेस्ट लिमिटेड है ना, तो टेस्ट लिमिटेड टेस्ट को देखेंगे। टॉलिन फेलिंग आयोडोफॉर्म, टॉलिन फेलिंग आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये बताइए, विल इट गिव टॉलरेंस टेस्ट? यस नो? क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा? अरे बोलो यार, है ना? CH है ना, एल्डिहाइड है तो देगा ही, ठीक है। और फेलिंग देगा, फेलिंग देगा कि नहीं देगा? हाँ या ना? No, sir. मरियम पार्कर क्या बोल रही है आप? यस और नो? No, sir. तो कौन देता है फेलिंग टेस्ट? कौन देता है फेलिंग टेस्ट? पढ़िए जरा नोट में, कौन देता है फेलिंग टेस्ट? Aliphatic aldehydes give failing test. एलिफैटिक, हाँ जोर से बोलिए सर। एलिफैटिक, ये क्या एरोमेटिक है? No, sir. It is not ये aromatic. कीटोन, इज इट कीटोन? No. तो ये क्या एलिफैटिक हुआ ना? क्या हुआ बताइए? एलिफैटिक एल्डिहाइड ही तो हुआ। पार्कर बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये फेलिंग टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? No, sir. हाँ या ना? क्या बोले? No, sir. नो ना पार्कर? Yes, sir. हाँ, अगला बताइए, टॉलरेंस टेस्ट देगा हाँ या ना? विल इट गिव टॉलरेंस टेस्ट? पार्कर नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा है सर। तो बोलिए ना, टॉलरेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा? ये क्या है? अच्छा ठीक है, यही तो दिक्कत, ठीक है ठीक है, हम समझ गए, हम समझ गए, हम समझ। ये क्या है? एल्डिहाइड, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक, व्हाट इज दिस? दिस इज कीटोन, ठीक। अब बोलिए टॉलरेंस टेस्ट देगा? टॉलरेंस टेस्ट देगा नहीं देगा? कीटोन है तो टॉलरेंस टेस्ट देगा पार्कर? यस सर। नो सर, नो देगा। सर। अरे ध्यान से बोलिए प्लीज, फेलिंग टेस्ट देगा नहीं देगा? नो सर। अब आयोडोफॉर्म देगा या नहीं देगा, क्या देखते हैं यहाँ पे? देखिए ऐसा कुछ है यहाँ पे, CH3CO, यहाँ पे तो नहीं है ना, तभी तो नहीं दे रहा है। कीटोन में है, यहाँ पे जो आपके पास कीटोन बना हुआ है उसमें है CH3CO, कार्ब CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद कार्बोनिल है, यस सर। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, सही है। यस सर। अब ये देखिए, बोथ ऑफ दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑल, मींस तीनों में से किसी एक का भी नाम लिख सकते थे आप, है ना, तीनों में से किसी एक का भी नाम लिख सकते थे। पहला ऑप्शन क्या हो जाता? CHO gives tolerance test but
doesn't. ठीक. Second, CHO gives spelling test, doesn't. Third, gives iodoform, but CHO doesn't. समझ में आएगा यहाँ या नो? All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, देखिए अगला. बेंजल्डिहाइड. ठीक है, बताइए क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो रमन सिंह नहीं समझ. पार्कर क्या बोल रही हैं आप? सॉरी, मरीम खातून क्या बोल रही हैं आप? मरीम खातून, you can write any one of them. Mariam Khatun, what you are saying? I could not understand what you were saying. अच्छा, आप लिखने दी चैट में. In exam you have to write. No. 1 2 3 में कोई एक भी नजर आ गया ना, हमको तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी ना. बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, हमें तो सब कुछ बताना पड़ेगा. ठीक, चलिए. लेकिन हम तो समझते इस बात को कि इफ यू सी एनीथिंग मीन कार्बोनिल कंपाउंड, इफ यू सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, इस तरह की चीजें, तो हम तो TFI करके ही करते हैं जनरली. ठीक है ना, मतलब उसमें कोई चांस कोई चीज छूटती नहीं है, बस यस नो करना रहता है जनरली. ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा एक तो चीज है ना कि जब आप डिस्टिंग्विश करने के लिए आइएगा ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो बार बार आपको ना इन दोनों को देखना पड़ता है ना. बेंजल्डिहाइड एसिड ये देगा, ये तो हम उसमें कंफ्यूज होते थे. तो देन आई मेड दिस कि हम एक चीज को देखेंगे भाई, ये टॉलरेंट टेस्ट देगा नहीं देगा, फेलिंग देगा नहीं देगा, आयोडोफॉर्म देगा नहीं देगा. फिर इसको अलग से देख लेंगे, टॉलरेंट देगा नहीं देगा, फेलिंग देगा नहीं देगा, और आयोडोफॉर्म देगा या नहीं देगा. अब उसके बाद जहां पे मान लीजिए अगर दोनों जगह टिक टिक रहता है, जैसे कहा था पुराना वाला केस था ना, ऊपर वाला एक. हाँ, जैसे मान लीजिए ये आपका, ये ना तो फेलिंग दे रहा है और ये भी फेलिंग नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली क्रॉस क्रॉस हो गया. तो फेलिंग यूज करके तो डिस्टिंग्विश हो नहीं सकता. दोनों के दोनों फेलिंग नहीं दे रहे हैं, दोनों के दोनों फेलिंग दे ही नहीं रहे, तो कहां से डिस्टिंग्विश होगा? तो एक में क्रॉस, एक में टिक होगा, वही सारे टेस्ट दिए जा सकते हैं ना, वही सारे टेस्ट को यूज किया जा सकता है. अब देखिए जैसे बेंजल्डिहाइड है, सो बेंजल्डिहाइड विल गिव टॉलरेंट टेस्ट, यस और नो? Yes, sir. टॉलरेंट टेस्ट देगा, देगा. फेलिंग देगा? No, sir. क्या बोला पारकर आपने, यस या नो? No. नो बोला ना, ठीक है. आयोडोफॉर्म देगा? No, sir. नो या यस बोलो यार, सर बोल के ना मेरा कंफ्यूज जाता है. यस या नो बोलो. हाँ, यस और नो? Yes, sir. यस सर बोल रही है, फिर आप देगा बेंजल्डिहाइड Yes. आयोडोफॉर्म टेस्ट? क्यों आप लोग ये बोल रहे हैं? हमको पार्कर समझ ही नहीं आ रहा, आप आयोडोफॉर्म के लिए क्यों इतना सीएचओ कहाँ है बताइए तो. अरे COCH3 होना चाहिए ना पार्कर. Yes, sir. तो आयोडोफॉर्म टेस्ट सर नहीं बोलना आपने अब. आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? No. हाँ, नहीं देगा ना. पहले आप यस बोल रहे थे शायद, पहले आप यस बोल रहे थे, Yes, sir. फिर सर बोल. ठीक है, चलिए. टॉलरेंट, अच्छा एसिटोफेनॉन. एसिटोफेनॉन क्या होता है? दिस इज एसिटोफेनॉन. आपकी तबीयत ठीक है मरियम पार्कर? Yes, sir. ठीक है, अच्छा. यहाँ बताइए टॉलरेंस टेस्ट देगा एसिटोफेनॉन? Yes. कीटोन है ना, कैसे देगा बताइए? No, sir. It will not give. तो यस क्यों कह रही हैं आप? इतनी गलती तो नहीं होती है. Sir, इतनी actually, गलती तो I नहीं. already wrote it down, but then I keep forgetting. I'm looking back at the screen, and then I'm forgetting what I wrote in the book. नहीं,
नहीं, एक सेकंड, तो आप स्क्रीन पे क्यों नहीं देख रही हैं? सिर्फ आप नोटबुक में से स्विच क्यों कर रही हैं बार बार? देखिए, दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, दोनों ही में क्या होता है, टॉलिन और फेलिंग में एल्डिहाइड देते हैं, मतलब कीटोन तो कोई टेस्ट नहीं देता ना पार्कर, टॉलिन हो चाहे फेलिंग हो, कीटोन तो देता ही नहीं है, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए ठीक है, आपके पास एल्डिहाइड में कंफ्यूजन हो सकता है कि एरोमेटिक है या फिर एलिफेटिक है, लेकिन कीटोन तो ना ही टॉलिन देता ना ही फेलिंग देता है। समझ में आ रही है पार्कर, हाँ या ना? Yes, sir. Yeah. फिर ये तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताइए, फेलिंग नहीं देगा, आयोडोफॉर्म देगा नहीं देगा? Yeah. Yes. ओके, सो व्हाट टेस्ट कैन वी यूज, कैन आई यूज फेलिंग टू डिस्टिंग्विश देम? क्या फेलिंग को यूज किया जा सकता है डिस्टिंग्विश करने के लिए? No. है ना, नहीं यूज किया, बाकी दोनों को यूज किया जा सकता है ना। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yeah. मरियम खातून, साद, आयशा, समझ में आ रही है सबको? चलिए Yes. ये देख लीजिए, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल। सर फेलिंग और हाँ जी। सर फिर से समझाएं तो समझ नहीं पाई। अब एक पार्कर आपको समझ में आया? आपने बोला ना डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा यूज होगा उसमें। खातून को तो समझ नहीं आ रहा, जोर से बोलिए ना खातून। पार्कर आपको समझ में आया मरियम ने क्या कहा? आयशा, आलिया, साथ किसी Yes, को sir. आवाज नहीं आ रही ना साफ? आलिया Yes, sir. आपको साफ आलिया आपको आ रही है आवाज साफ मरियम खातून की? No, sir. खातून आप पता नहीं, आप माइक यूज करते हो या नहीं करते हैं? मरियम खातून, मरियम खातून टाइप कर रही है, ये मास्टर हमको टाइप कराता रहेगा, सिर्फ बोल रही होगी। पता नहीं क्यों आपकी आवाज क्यों नहीं आती सही से, कभी नहीं आती किसी क्लास में, बहुत रेयरली होता है हमको समझ में आता है आप क्या बोलना चाह रहे हो। इफ यू आर टाइपिंग देन इट इज फाइन, तो इफ आप टाइप कर लेंगे तो मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ बताइए आप लोग TFI। सर आई गॉट इट, अच्छा। चलिए उससे पहले ना थोड़ा सा हम एक और स्टेप कर देते हैं, TFI शायद आप लोग के थोड़ा सा एडवांस हो जा रहा है। प्रोपेनल, एल्डिहाइड और कीटोन। Aldehyde. प्रोपेनल, एल्डिहाइड और कीटोन। प्रोपेनॉन, एल्डिहाइड और कीटोन। Ketone. ठीक है, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर CHO ऐसे, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर ऐसे, सही? ठीक, हाँ। टॉलन, टॉलन टेस्ट, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनल देगा नहीं देगा? Yes, sir. यस और नो? यस। फेलिंग, यस और नो? Yes, sir. आयोडोफॉर्म, No, sir. यस या नो? No. टॉलन, कीटोन, No, sir. यस या नो बोलो यार प्लीज, यस या नो बोलो। फेलिंग, No. आयोडोफॉर्म, Yes. ठीक है। अब ये देखिए, ये इन दोनों को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो किसी से भी कर सकते हैं। हाँ, अब आपको ये करना है कि आप ऐसे किया कीजिए, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा वो हम आपको बता देते हैं। आपके पास आएगा इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए CHO, तो पहले आपने लिखा TT, टॉलन, ये देगा, हाँ देगा, टॉलन ये देगा नहीं देगा, तो टॉलन टेस्ट आपने लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस तरह से कुछ हो गया, टॉलन देगा, टॉलन ये भी देगा, फेलिंग देगा, फेलिंग ये भी देगा, आयोडोफॉर्म ये देगा, आयोडोफॉर्म ये नहीं देगा। सो अब टॉलिन और फेलिंग तो दे रहा है, टॉलिन फेलिंग ये भी दे रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है, सो विल यूज आयोडोफॉर्म टेस्ट। बात समझ में आ रही है या नहीं, ये बताइए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके,
अब एक जो है ना आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, उसको करते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं है आपके। जस्ट अ सेकेंड। CRT class 12th। टू फोर DNP टेस्ट याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? ये याद है ना? देखिए, 2,4-DNP on a reaction with aldehyde and ketones gives yellow, orange or red solids. Therefore, these are used as test for identification of aldehyde and ketone, है ना? Aldehyde है या ketone है, aldehyde इसके लिए नहीं यूज होता है. It is not used for the distinction of aldehyde and ketone. It is used for the identification of aldehyde and ketone. कि आपने A यूज किया है, ठीक है ना, एग्जांपल A यूज किया है 2,4-DNP के साथ, and it is giving yellow, orange or red solid. That means A can either be aldehyde or ketone. बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? याद आया सबको? ठीक है, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इस तरह के सवाल आएंगे आपके पास, है ना, आपको पढ़ते पढ़ते आधा घंटा लग जाएगा। An organic compound with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent. पहला देखिए साथ साथ A प्लस 2,4-DNP क्या देता है? येलो PPT gives yellow PPT. That means क्या इसे आंसर क्या निकला? इसे आंसर ये निकला A is aldehyde और कीटोन। बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना? जल्दी बताएं। इस लाइन से Yes. हमें ये है ना कंक्लूजन निकला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया। एंड यही कंपाउंड C8H8O gives yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide. सेकंड क्या बोल रहा है? A लिया हमने, इसमें हमने डाला NaOH प्लस I2, तो मिला क्या? वी गॉट येलो PPT। अच्छा, ये ऑरेंज रेड था, माय बैड। ठीक है, वही सेम चीज, कोई बात नहीं, ऑरेंज रेड, यहाँ मिला येलो PPT। ये बताइए, इज दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट, यस और नो? Yes. कैसे है ना, ये भी लिखा है हमने, हाइपोहेलाइट नहीं है, इट इज नॉट हाइपोहेलाइट, बट आई हैव रिटन दिस आल्सो, NaOH plus I2 will give you sodium hypoiodide, NaOI मिल जाएगा। समझ में आ रही है? So NaOH plus I2, it is iodoform test, it is iodoform test। तो येलो PPT मिलता है, यानी कि what does it mean? It means इसका कंक्लूजन ये निकलेगा that A has CH3 C डबल बॉन्ड O फ्रैगमेंट। अभी इसके बाद कुछ जुड़ा हुआ होगा, फ्रैगमेंट। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, जल्दी बताएं। हाँ जी, आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं Yes. बढ़े बताइए? आगे बढ़े। Yes, sir. ये क्या कह रहा है? इट नाइदर reduces टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। ना ही ये टॉलेंट को रिड्यूस करता है, ना ही फेलिंग। समझ में आ रही है I don't know. जी? क्या किसी ने कुछ बोला? क्या बोला? A doesn't reduce टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट। बताइए क्या हाँ, मतलब क्या? वेरी गुड। A is a कीटोन, है ना, एल्डिहाइड नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कीटोन है। अब सुनिए जरा यहाँ पे,
अब उसके बाद उन्होंने कहा है on drastic oxidation with chromic acid it gives carboxylic acid B having molecular formula C7H6O2. ठीक है, ये भी है नॉर इट डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स एजेंट, यहाँ बताएंगे आपको, ये 11th का है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन वाला आपको समझ में आना चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ए में आपने क्या डाला, क्रोमिक एसिड H2CrO4। ड्रास्टिक का मतलब हाई हीट एंड व्हाट डिड यू गेट, C7H6O2। ध्यान से देखिएगा क्या मिला आपको, C7H6O2। दिस इज, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा हटाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, क्या होता है COOH, क्या बचा, C6H5 बचा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखिए C कितना है, C7H6O2। अरे बोलो भाई हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, दैट मीन्स हमारा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए क्या है, व्हाट इज ए। C डबल बॉन्ड O CH3 एंड B क्या है, दिस इज A, दिस इज B। C6H5 तो क्या होता है, बेंजीन ही तो होता है, और कुछ तो हो नहीं सकता ना, बेंजीन ही होता है C6H5। ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में, अब यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आपको बार बार दूसरे चैप्टर्स के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ, अगले क्लास का होगा फिर, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल टू, इस लाइन को थोड़ा पढ़िए, oxidation of 2-degree alcohol in drastic condition leads to cleavage of CC bond forming carboxylic acid with less number of carbon atom, with less number of carbon atoms। जब आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कीटोन, है ना, ये देखिए यहाँ पे यू हैव 2 डिग्री अल्कोहल, किसमें कन्वर्ट किया आपने, कीटोन में। कीटोन को फर्दर आपने ऑक्सीडाइज किया इन ड्रास्टिक कंडीशन, यू गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। दिख रहा है सबको हाँ या ना, दिख रहा है सबको, ठीक है, ऑक्सीडाइज किया। अच्छा, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब ये बताइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ख्याल है, ड्रास्टिक कंडीशन इट मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक, स्ट्रॉन्ग, राइट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। अब इधर आइए, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्रोमिक एसिड क्या स्ट्रॉन्ग है, हाँ या ना, बताइए, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वही चीज हो रही है, अब यही सवाल है आपका मिला जुला के एल्डिहाइड कीटोन्स में। फिर से इस लाइन को पढ़िए, आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। तो देखिए कहना क्या चाहता है ए, जिसका फॉर्मूला है क्या, C8H8O, C8H8O, ये रिएक्ट करता है क्रोमिक एसिड से Ca, ड्रास्टिक कंडीशन में आपको carboxylic acid with formula C7H6O2. There is a decrease in the number of carbon atom with less number carbon atom. You got what? What did you get? You got a carboxylic acid with less number of carbon atom. ये सुनो पीसल दिख रहा है सबको हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। So this is what, this is aldehyde. This is what A is, sorry, not aldehyde, it is a ketone whose formula is this. All of you understood this? Yes or no? Please tell me सारी चीजें। अब ब्रोमीन वाटर और इसका ना हम बताते हैं, अब पहले इनको लिख लीजिए, ये सवाल तो आपके पास एनसीईआरटी में मौजूद है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं दिया हुआ, उन्होंने सीधा रिएक्ट, अब जिस तरह से आप देखिएगा मतलब आंसर क्या दिया हुआ है, ए ये है, बी ये है, और ये रिएक्शन है सीधा।
कुछ वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ रहेगा, ठीक है, जनरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ रहता है। अच्छा, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ए फॉर्म्स टू हम आप बेयर्स, अब ना आपको बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर के बारे में बताते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, हम बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर के बारे में। लेट मी नो वंस यू डन। Well, if you got this, please tell me. All of you wrote, hi Anna. Yes, sir. अब आती है बेयर्स रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर। बेयर्स रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर। How many of you have done haloalkene halorine with me? Raise your hand. How many of you have done haloalkene and halorine? आयशा ने किया है, ओके ठीक है। पार्कर ने किया, आलिया ने नहीं किया, ओके फाइन। साथ ने भी नहीं किया, ठीक है। कैन यू गो टू रिएक्शन ऑफ alkene plus Br2, it gives vicinal dihalide. Vicinal dihalide. Can you go to your notes? Yeah, got it. You got there? Yes, Parker? Yes, Parker, sir. you got there? Alkene plus Br2 gives vicinal dihalide. Can you see that in your notes? मिला नहीं मिला किसी को? No, I got it. You got it. So can you see a note there? Br2 is used for something like that. कुछ लिखाया हमने या नहीं लिखाया? Yes, sir. लिखाया कुछ? क्या लिखाया बताइए जरा। It is used for test of unsaturation. Test of unsaturation. That means if I have alkene, so alkenes decolorize bromine water. लिखाया है ना? ठीक है। उसी तरह से same thing is that I mean same uses of Bayer's reagent.
Bayer's reagent, it is also pink in color, and alkenes, it decolorize it. So if you look at C8H8O, C8H8O, for sure you can say that it is not a alkene, right? You have double bonds there. C8H8O may you will have double bonds, right? Yes or no? Carbon-carbon double bond will be there in C8H8O. You can look at the formula and tell. नहीं बोल सकते. बोल तो सकते हैं ना. Alkene, what is the formula for alkene? CnH2n+2. Right? So CnH2n plus will 2. If I have C8, then how many hydrogens should have been there? Hydrogen should have been 8 to the 16 plus 2, that is equal to 18 hydrogens. But how many hydrogens do I have? Only 8 hydrogens. That means there is a high degree of unsaturation. There are multiple pi bonds. Can I say that? CC pi bonds also, right? Yes or no? If I look at the formula, then I can say no. But I have we have multiple double bonds. We have multiple pi bonds, but it is still not decolorizing bromine water or Bayer's reagent. This is a note that you should write. If a molecule doesn't decolorize Br2 and Bayer's reagent, even with a high degree of unsaturation, then the molecule has benzene ring. And this was the major issue with benzene ring. This is also one of the reasons why benzene has a resonating structure and resonance was formed, because if they got the formula of benzene, it was having double bonds, but these double bonds were not acting, or they were not behaving as alkenes. These double bonds, they were not behaving as normal alkenes, right? They were not decolorizing Br2, they were not decolorizing Bayer's reagent. Okay, so if you see a molecule which is up, if you see the formula, it is like speaking loudly that I have pi bonds. It is speaking very loudly that I have pi bonds with the formula itself, but it is still not decolorizing the bromine water and Bayer's reagent. That means for sure this particular molecule has a benzene ring. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. सबको ये नहीं रिएक्ट करेगा ना, आपको तो पता है, ये पाई बॉन्ड तो देखने को है. Actually, it is like this. Original तो benzene ये है. आया ना, आलिया, आयशा, मरीम, खातून साथ, partial double bond. Partial double bond. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Okay. So that is it for today. आज के लिए इतना ही. And then we are going to oxidation हो गया. हाँ, दो important reactions कुछ रह गए in this aldehyde and ketone. That is reactions due to alpha hydrogen, and that will be aldol condensation, Cannizzaro condensation, and then aldene Claisen होगा, उसके बाद Cannizzaro reaction. Then we will see one electrophilic substitution. So in the next class, we will be done with the remaining reactions as well as the preparation of carbon.